Namaste students, welcome to Easy Chemistry. चलो now we are going to discuss hydrolysis of salt. अब हम लोग salt को hydrolysis करवाएंगे. So salt hydrolysis. What do you mean by salt? तो कभी जब किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, it forms salt, है ना? करेक्ट? सो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो both will neutralize each other effects and forms neutral salt. And their salt will not go under hydrolysis. Say for example, if I talk about sodium hydroxide, है ना? Sodium hydroxide is one type of strong base, reacts with the hydrochloric acid, one type of strong acid. A strong base is reacting with a strong acid, it forms sodium chloride, NaCl, okay? NaCl and water. ठीक है? So here the strong base reacts with a strong acid from sodium chloride. Sodium chloride is one type of neutral salt which will not go under hydrolysis. Like if it is react this NaCl with water, it will completely get ionized only and forms Na plus, Cl minus, H plus ion and OH minus ions. Okay? This process is not a hydrolysis process. This process is called as just ionization or dissociation. Okay? But if weak acid reacts with strong base, so acid is not that much of powerful to neutralize the base. The salt formed in this reaction is basic salt. It is one type of basic salt. Okay? Basic salt plus water. So, if I say weak acid, if I take weak acid such as acetic acid, अगर उसको रिएक्ट करवा दिया हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो here the acetic acid is one type of weak acid, correct? It is one type of weak acid. ठीक है? Sodium hydroxide is one type of strong base. Both will react with each other and forms CH3COO Na, CH3COO Na and H2. Okay? Now what will happen? This CH3COO Na is one type of strong electrolyte. CH3COO Na is one type of strong electrolyte. So what will happen? This CH3COO Na will undergo ionization first and form CH3COO minus and Na plus. Okay? Now this acetate ion CH3COO minus is one type of conjugated base of weak acid. And if you remember in a previous class I explained you, weak acid has a strong conjugated base. मतलब ये जो acetate ion बना है, it is one type of strong base. So what will happen? So if this acetate ion
if this acetate ion reacts with water, it means it undergoes hydrolysis. It undergoes hydrolysis. What happens? This water will dissociate into the H plus and OH minus. This will accept one H plus ion and forms acetic acid CH3COOH, and this OH minus will remain same. Or due to this hydrolysis process of acetate ion, it produces extra amount of hydroxide ion. ये hydroxide ion की concentration बढ़ जाएगी. It means basic character भी बढ़ता जाएगा. So if weak acid reacts with the strong base, produces extra amount of hydroxide ion due to hydrolysis and forms a solution as a basic solution. Hope understood. Hope all of you understood what happened when weak acid reacts with a strong base. If I take one more example, like if I say one type of phenol, ROH, sorry, ROH नहीं, alcohol or phenol, anything. If I talk about alcohol, ROH, उसको NaOH से साथ रिएक्ट करवा देते हैं. तो alcohol, we know that alcohol is one type of acidic substance when it reacts with the sodium hydroxide. So again, this is one type of weak acid. This is one type of strong base. So what will happen? It will form sodium alkoxide, RONA, and it will form H2O. ठीक है? This is your sodium alkoxide, one type of basic salt. कैसे पता कि ये basic salt है? Again, this sodium alkoxide will go ionization. If it undergoes ionization, it will form alkoxide ion, RO minus, and Na plus. Yes, this RONA will undergo hydrolysis. So RO minus, if undergoes hydrolysis, it will form H plus and OH minus. Correct? This H plus ion will go to RO minus, will form ROH, and OH minus. Again, the OH minus concentration increases. If OH minus concentration increases, the solution will become basic. Understood? यहाँ तक पूरा समझ में आया? Okay. Now we are talking about when weak base reacts with a strong acid. If weak base reacts with a strong acid, so obviously the salt form, it will be a acidic salt. कैसे देखो ध्यान से? If I talk about ammonia, NH3 is one type of weak base. So what will happen? Ammonia will react with the hydrochloric acid HCl. So it will form ammonium chloride NH4Cl. Yes. Now ammonium chloride is one type of strong electrolyte. It will go under hydrolysis process. Now ammonium chloride, if it undergoes hydrolysis, ionization, it forms ammonium ion and Cl minus ion. Now ammonium ion is not a stable ion, because we know that weak base has strong conjugated acid. Yes. So if this ammonium ion goes under hydrolysis, so what will happen? This ammonium ion reacts with the water and it will dissociate into two parts, NH3 and H plus ion,
and it will donate H plus ion to the water to form H3O plus ion and ammonia. Now, in this process, we can notice that the concentration of H3O plus is increasing. If concentration of H3O plus is increasing, it means the solution will become acidic in nature. Yes or no? So hope all of you understood. Similarly, if weak acid reacts with the weak base, so obviously it will form neutral salt. Like if I talk about acetic acid, CH3COOH, reacts with ammonia. Both are weak acid and weak base. It will form ammonium acetate, CH3COONH4. Okay? Now, in this case, again, this is your strong electrolyte. Both will go under ionization. So, CH3COONH4, when it goes under ionization, so it will produce CH3COO minus and NH4 plus. Okay? Now, if this acetate ion undergoes hydrolysis, what will happen? If this acetate ion undergoes hydrolysis, so water will dissociate into H plus and OH minus. This H plus ion will go to the CH3COO minus and forms CH3COOH and OH minus. It means this acetate ion is increasing the concentration of hydroxide ion. The solution should be basic. But we have an ammonium ion also, which also undergo hydrolysis. This H plus ion will go to the H2O. It will form ammonia and H3O plus. This ammonium is increasing the concentration of hydronium ion. मतलब H3O plus की ion concentration बढ़ गई. यहाँ पर hydroxide की concentration बढ़ गई. So what will happen? This hydroxide ion and this hydronium ion will neutralize each other's effect. The solution will become neutral in nature. है? So we concluded that when strong acid reacts with a strong base, it forms neutral salt. When weak base reacts with the strong acid, it forms acidic salt. When weak acid reacts with a strong base, it forms basic salt. And we can prove by doing hydrolysis of that salt. Yes? Chalo, if I take the sum of the examples, whether the given salt is acidic or basic. If I talk about potassium cyanide, KCN, whether this salt is acidic or basic. So check karo. The potassium comes from potassium hydroxide. Okay? And cyanide comes from hydrogen cyanide. So here hydrogen cyanide is one type of weak acid. Potassium hydroxide is one type of strong base. Strong base reacts with the weak acid. It means it is one type of basic salt. Anna? If I talk about sodium carbonate, a sodium carbonate is made up of two components. Sodium hydroxide, sodium comes from the sodium hydroxide. This carbonate comes from carbonic acid, H2CO3. And we all of us know that this H2CO3 is one type of
weak acid. Carbonic acid is one type of weak acid. Sodium hydroxide is one type of strong base. So strong base, weak acid forms again basic salt. है ना? Similarly, if I talk about aluminium chloride, AlCl3, if I talk about aluminium chloride, AlCl3, now again the same thing. This AlCl3 is made up of two components, aluminium hydroxide and hydrochloric acid. Now we know that hydrochloric acid is one type of strong acid. Aluminium hydroxide is one type of weak base. So weak base mixed with the strong acid, it will form acidic salt. Yes or no? All of you getting or not? If I talk about one of salt, ammonium nitrate. Ammonium nitrate. Ammonium nitrate is made up of two components, ammonium hydroxide and nitric acid. We know that nitric acid is one of strong acid. So nitric acid is your strong acid. Ammonium hydroxide is one type of weak base. So weak base, strong acid. It means your salt will be a acidic in nature. Okay? So hope all of you got this. When what happened when this type of acid reacts with this type of base. Okay, thank you. Hello students, now we are coming to the hydrolysis constant and degree of hydrolysis. Okay, तो अब हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि जब वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट जब ये करते हैं वो एसिड या बेसिक नेचर में होता है और हाइड्रोलिसिस में जाता है। अब कितना हाइड्रोलिसिस में जा रहे हैं उनके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का भी डिस्कस करेंगे कि कितना हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सॉल्ट या तो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा या सारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कुछ अमाउंट में होगा। वो कितने अमाउंट में होगा उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर देंगे हम लोग। लाइक इफ आई से आई हैव अ सॉल्ट ऑफ CH3COONA, इट इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। तो इस बेसिक सॉल्ट को अगर हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं तो CH3COO माइनस एंड Na प्लस हो गए। यस, अब इसको हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3COO माइनस, ओके, यहां से CH3COO माइनस प्लस H2O, ओके, गिव्स यू CH3COOH प्लस OH माइनस। ये थोड़ी देर पहले अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहां से हमको मिलेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। यहां पर मैं लिखूंगा कि एट इनिशियल अमाउंट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज C, इसका कंसंट्रेशन 0, कंसंट्रेशन 0। आफ्टर सम टाइम इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी C माइनस C अल्फा। ये C अल्फा जितना बन जाएगा ये C अल्फा जितना बन जाएगा। इफ आई राइट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, ठीक है, तो इट इज रिटन एज C अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस 1 माइनस अल्फा, ओके, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। यहां तक बात समझ में आई। इस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को KH को KW अपॉन KA भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आप इस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को KH अपॉन KW क्यों लिखते हैं? तो आप KW की जगह पर क्या लिख सकते हैं? H3O प्लस इंटू OH माइनस, करेक्ट। KW की जगह आप H3O प्लस इंटू OH माइनस KA फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए KA क्या होता है बताइए? ऐसा कुछ हो जाएगा कि एसिटिक एसिड के लिए KA CH3COO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन CH3COOH, है ना। तो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये H3O प्लस क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ऊपर चली जाएगी,
तो व्हाट यू विल गेट CH3 COOH है ना into OH minus upon CH3 COO minus. देखो ध्यान से देखो CH3 COOH into OH minus upon acetic acid. So we can prove that the hydrolysis constant for basic salt is KH is equal to KW upon KA. ठीक है? So if I want to calculate pH from this, है ना? तो pH की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? pH की जगह पर pH के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? pH is equal to C अल्फा, ये ना हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? C अल्फा. और यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट यू विल गेट? अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो KH इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. यहां पर अल्फा हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया वन की कंपैरिजन में, वन नेग्लेक्ट कर दिया अल्फा की कंपैरिजन में, सॉरी. सो KH इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KHC, है ना. सो व्हाट वी कैन राइट लाइक दिस, C इंटू रूट ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अपॉन C. ठीक है. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं KW अपॉन KA. तो C इंटू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C. ठीक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? रूट C इंटू रूट KW अपॉन रूट ऑफ KA. ठीक है. ये आपका क्या हो गया? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई कीजिए, तो लॉग ऑफ OH माइनस हाफ लॉग C, हाफ ऑफ लॉग C, हाफ ऑफ लॉग KW, देन माइनस हाफ ऑफ लॉग K. माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस लॉग OH माइनस हाफ ऑफ लॉग C माइनस हाफ ऑफ लॉग KW प्लस हाफ ऑफ लॉग KA. तो अगर हम लोग PK या POH के रिस्पेक्ट से लिखें तो वी कैन राइट लाइक दिस, POH is equal to ये क्या हो जाएगा? इसको तो माइनस हाफ ऑफ लॉग C रहने दीजिए, ये प्लस हाफ ऑफ PKW हो जाएगा. ठीक है. और ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ PKA. ठीक है. अलग समझ आ रहा है? You got the formula of POH from here. अगर यहाँ से POH की वैल्यू मिल जाती है तो वो pH वाले फॉर्मूला में रख देना, तो आप यू विल गेट द होल वैल्यू. ठीक है. या तो थोड़ा रीअरेंज करना तो रीअरेंज भी कर सकते हो. POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस हाफ ऑफ लॉग C माइनस हाफ ऑफ PK. रीअरेंज करके आपका ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा. होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. देखो फिर से समझा देता हूँ क्या किया मैंने एक सॉल्ट लिया, बेसिक सॉल्ट लिया, उसको आयनाइज करके एसिटेट आयन और सोडियम आयन बना दिया. फिर इस एसिटेट आयन को हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया. उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड किया, उसको KW और KA के साथ रिलेट किया. फिर उसके बाद तो फिर OH में pH फाइंड करने के लिए OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को C अल्फा लिख दिया. फिर वैल्यू पुट अप करके लॉग अप्लाई करके वी गॉट दिस फॉर्मूला. है ना? समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. ओके. चलो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड. देखो चलो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज वन टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है. तो इफ आई डिसोशिएट अमोनियम क्लोराइड
into water, so it form NH4 plus and Cl minus ion. Now this ammonium ion will undergo hydrolysis. If ammonium ion undergo hydrolysis, so what it forms? It forms ammonia and hydronium ion, H3 plus. So if I want to find out, again same thing, if I want to find out degree of hydrolysis, so at T is equal to 0 time, initial time, the concentration of ammonium ion is C, the concentration of ammonia and hydronium ion is 0. जैसे जैसे टाइम जाएगा C माइनस सी अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा जितना बन जाएगा, ये C अल्फा जितना बनता जाएगा. Correct? Again, if I want to find out the hydrolysis constant, KH is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Alpha को पहले से नेग्लेक्ट कर दो तो KH is equal to C alpha square. Alpha is equal to under root of KH by C. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये तो चलो ठीक है, वो पहले से हमारा चलता ही आ रहा है फॉर्मूला. K से लेके कोई भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करो, ऐसे ही फॉर्मूला बनता है अल्फा इज इक्वल टू KH बाय C या KA बाय C या KB बाय C. ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आया. बट इफ आई राइट KH इज इक्वल टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर एसिडिक सॉल्यूशन इज KW अपॉन KB. आई एम रॉन्ग या राइट, चलो चेक करते हैं. तो देखो KW इट मींस concentration of H3O plus into OH minus. और if I write KB and H constant for base for ammonia, तो अमोनिया में कौन से आयन्स बनेंगे? एक बनेगा अमोनियम आयन दैट इज NH4 प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन अपॉन NH3, है ना? ये याद है ना आपको? कुछ याद कीजिए, ऐसा कुछ पढ़ा था आपको? इफ आई राइट हियर, ऐसा कुछ लिखता हूं, देखो अमोनिया गेट रिएक्ट्स विद द वाटर, है ना? अब इसके लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं NH4 प्लस इंटू OH माइनस, है ना? तो कंसिडर दिस एंड राइट दिस KB. अब इसके लिए KB लिखेंगे तो NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH3. ठीक है, आ जाओ वापस यहां पर आ जाओ. देखो अब यहां पर आप देखो, दिस OH माइनस एंड OH माइनस गेट कैंसिल, दिस NH3 गोस अप, तो क्या बन जाएगा? ये इसकी बन जाएगा H3O प्लस इंटू NH3 अपॉन NH4 प्लस. ध्यान से देखिए, दिस इज होल दिस ओनली H3O प्लस इंटू NH3 अपॉन NH4 प्लस. तो वी कैन राइट लाइक दिस, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, है ना? वी गॉट सम ऑफ रिलेशनशिप्स. One we got KH is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, and then KH is equal to KW upon KB for acidic salt. ठीक है ना? अब मुझे फाइंड आउट करना सेम थिंग, फिर से मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ pH. If I want to find out the value of pH, to find out value of pH, H3O plus is equal to concentration चाहिए. H3O plus यहाँ पर मेरा क्या है? C alpha. और अल्फा क्या है मेरा? इस अल्फा इज अंडर रूट ऑफ KH बाय C. और KH क्या है? KH इज KW बाय KB इंटू C. ठीक है, तो यहां पे रूट C को कैंसिल कर दो, तो रूट C इंटू रूट KW अपॉन रूट ऑफ KB. यहां पर आपको H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई. ठीक है ना? अब लॉग अप्लाई कर दो दोनों तरफ. इफ यू अप्लाई लॉग, व्हाट यू विल गेट? लॉग ऑफ H3O प्लस, है ना? हाफ लॉग C प्लस हाफ ऑफ लॉग KW माइनस हाफ ऑफ लॉग KB. तो माइनस अप्लाई कर दोगे तो माइनस ऑफ लॉग H3O प्लस, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ऑफ लॉग H3O प्लस माइनस हाफ ऑफ लॉग C माइनस हाफ ऑफ लॉग KW
minus half of log kb plus half of log kb. So what you will get in place of minus log h3 plus, what you can write? You can write pH. So pH is equal to minus half of log c plus half of pKw minus half of pKb. So finally you can write pH is equal to half of pKw minus half of log c minus half of pKb. You got this formula. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब कुछ समझ में आया, सारे हाइड्रोलिसिस समझ में आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. थैंक यू वेरी मच.